So we should know what are the contents of a partnership deed, what exactly is written in the partnership deed. So that is also which is very important. So now let us look at that. Now see, this is the contents of a partnership deed. I hope this slide is clear to you. Now see, first thing, name and address of the partnership firm. Now let us come back to our example. Rahul, Akshay and Sheetal were there and they were opening a partnership, right? Now, if we look at that, you can see what is the first point we are talking about. Just give me a second. Right. So we were talking about name and address of the partnership firm. For example, XYZ Food है, तो जो हमारा partnership deed बनेगा ना, so this is an agreement, for example, right? तो इस deed में ये भी लिखा होगा कि कौन सी location पे. For example, let us take any example. For example, हमने एक चांदनी चौक में खोल दिया, ठीक है, वहां पे पराठे वाली गली है, ठीक है. So the location is चांदनी चौक, Delhi. So that is mentioned in the deed, right? So चांदनी चौक में XYZ Food Corner खुल चुका है. Next, name and address of the partnership. Now second is the name and address of all the partners. So you should know the details of the partners as well. Second is the name and address of the partners. So now for example Rahul, उसका address, ठीक है. Akshay, then Akshay's address, then Sheetal's address. This is what? This is the name and address of the partners. So that is also which is written in the partnership deed. Easy. Next, if you will see, it says the nature of the business to be carried out. What kind of business are you operating? Right? किस तरीके का business खोल रहे हो? Steel manufacturing खोल रहे हो? Dental है? क्या है? Right? But हमारा food business है. So we will write food. So nature of business is food business. So that is also written here. Easy. Next, so after the food business, you can see date of commencement of the partnership. कि partnership कब शुरू हो रही है? On which date the partnership deed or the partnership is taking place? Partnership कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई या हो रही है? तो मान लो for example हमें खोलनी है, for example, ठीक है, हमें जुलाई में खोलनी है, तो हमने लिख दिया 1 जुलाई 2025 for example, right? So 1 जुलाई 2025 को चांदनी चौक में आ जाना XYZ फूड कॉर्नर पे, जिसके मालिक 3 है पार्टनर्स, राहुल, अक्षय एंड शीतल, राइट? सो बी देयर गाइस टू हैव parathas. Next is the duration of partnership. Fixed or at will. Now this is something you don't have to understand in detail कि अगर आप पार्टनरशिप सोच रहे हो, फॉर ज्यादातर 95% you will think that you will operate it for a long time, but sometimes we can think, no, I just want to open this partnership for 5 years, after that we will be separated. So you can write that as well कि कितने duration की partnership है. Next is the capital contribution by each partner, very important. So you know the meaning of capital, right? I will assume you know it. What is the capital? It is something which has to be done, so that is the amount, the money invested in the business. The money invested in the business, you cannot call that a liability. No, that is not a liability. That is a money, that is a contribution that you are doing to your particular firm. That money invested in the business, that is the capital. That is why in the accounting equation we write liabilities plus capital is equals to assets. तो हम एक साथ क्यों नहीं लिखते फिर? मुझे बताओ, लाइबिलिटी में ही कैपिटल को लिख देना चाहिए, फिर तो अलग क्यों लिखते हैं? बिकॉज कैपिटल इज डिफरेंट, राइट? ए उनामलाई, आई होप योर क्वेरी इज आंसर्ड, राइट? समझ गए आप? सो कैपिटल इज व्हाट? मनी इन्वेस्टेड. तो कितनी किस पार्टनर ने लिखी? फॉर एग्जांपल राहुल ने, मैंने पैसे लगा दिए 1 लाख, अक्षय ने लगा दिए 50,000. अक्षय तो अमीर था, तो अक्षय ने लगा दिए 5 लाख. 1 lakh, 5 lakh. Sheetal is a new partner. She does not have huge money right now, so she is also investing 50,000. Right? So she is also investing 50,000. Now, these were the some things which are
under your partnership deed. Now there are more. So these are the first things which are there. There are more. So let us see the next. Here comes the most important part. Profit and losses sharing ratio among the partners. So we had Rahul, we had Sheetal, we had Akshay. So how will they share the profits and losses? That will also be mentioned. What will be the ratio of sharing profit and losses? That is also mentioned in the partnership deed. For example, we decided that I am your teacher, I am elder. मुझे ज़्यादा ratio दो, right? मैंने ऐसे बोला, which is not a good thing, but मैंने ऐसा किया, ठीक है? तो मुझे bad बोल लो. Example में मैं खुद को bad मानूंगा, आप सब तो अच्छे हो, ठीक है? Now राहुल ने बोला 3 मेरे पास आएगा हिस्सा, 2 हिस्सा शीतल के पास, 1 हिस्सा अक्षय के पास. तुम वो देख रहे हो, अक्षय ने सारे पैसे लगा दिए, अक्षय को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है, ये तो गलत है. बट दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड, ठीक है? अक्षय ने एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया. नाउ फॉर एग्जांपल द फर्म इज अर्निंग 6 लाख प्रॉफिट. तो 6 लाख में से राहुल को 3 लाख मिलेगा, ठीक है? शीतल को 2 लाख मिलेगा और अक्षय को 1 लाख. सो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. नाउ बट इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट टू. मेरा प्रॉफिट ज्यादा तो मेरा लॉस भी ज्यादा. तो अगर 6 लाख का लॉस हो जाए तो मुझे 3 लाख बेयर भी करने पड़ेंगे. सो दैट इज व्हाई it is very important to understand the profit sharing ratio. So this is how we write the profit sharing ratio. Next, interest on capital if any. ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ आएगा कि what is interest on capital. If someone is contributing that capital, right? So they may say as a partner, for example, Akshay is saying that I'm contributing so much. I'm contributing 5 lakh. So I'm investing some money in the business. मुझे उस पर भी तो रिटर्न मिलना चाहिए ना. मुझे उस पर 10% दो हर साल. That is what, that is interest on capital. It is not mandatory. अगर लिखा है ना if any, if written, you have to give. Interest on drawings. Now drawings is what? So drawings क्या होता है? अपने यूज के लिए उस चीज को निकाल लेना. For example, if I am withdrawing money of the business, of the partnership for my personal use, then that is a drawing, right? If I am withdrawing again an asset, very important asset of the business. For example, this is a tablet and this is an asset of this organization. But if I'm taking it at home to watch Netflix series, भाई मजा आ रहा है, मैं मैच देख रहा हूँ यहाँ पे. So this is what I'm withdrawing it. I'm doing drawings out of the companies, not yeah, out of our firm. तो अब यहाँ क्या हो रहा है? The company can say or the firm can say that आप इस पे हमें इंटरेस्ट दो, कि आपने हमारा सामान लिया वापस दे दोगे, चलो ठीक है, बट उस पर हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे आप पे. तो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? फर्म. और कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? आपकी पार्टनर्स, राइट? ये भी अगर रिटर्न है इफ एप्लीकेबल तो ये भी देना होगा. देन अगेन सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन. नाउ व्हाट इज सैलरी और कमीशन? सर आप कहोगे सर सैलरी तो होती ही है, एक पार्टनरशिप में तो सैलरी तो मिलेगी. नो, सैलरी में आप ऑलरेडी पार्टनर्स हो, तो यू विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फाइनल. सैलरी तो फिक्स होती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सैलरी तो मिलती ही है. सो अगर ये भी डिसाइड होता है कि ये आपका प्रॉफिट और लॉस शेयर तो होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड, बट स्टिल नाउ अक्षय इज डिमांडिंग दैट मेरे को एक फिक्स सैलरी भी दो. प्रॉफिट और लॉस तो देख लेंगे, बट अक्षय इज डिमांडिंग दैट गिव मी सम सैलरी आल्सो एवरी मंथ. सो अक्षय इज सेइंग, पार्टनरशिप डीड में अक्षय ने लिख दिया, गिव मी 50,000 every month, 50,000 as a salary. So that will also be possible if it is written in the partnership deed. Next, duties and responsibilities. For example, right, for example, duty of Rahul is to acquire raw materials. रॉ मटेरियल्स की सारी चीजें देखनी मेरा काम. अक्षय का काम है कस्टमर्स ढूंढना, टू एक्वायर कस्टमर्स. शीतल का काम है रिव्यू लेना. So this is just an example. So your role and responsibility will also be mentioned under your partnership deed, right? Got it, guys? Very important. Next, rights of partners in decision making. क्या right है आपका while you are making a decision? ठीक है? Next, admission of new partners, conditions and procedures. Now, Rahul, Sheetal and Akshay were there in the partnership food business.
बट नाउ दे आर थिंकिंग कि अगर कभी किसी और पर्सन को लाना हो, ऐड करना हो, इफ यू वांट टू ऐड अनदर फ्रेंड और समवन एल्स, what will be the procedure? So that admission of a partnership will be based on the terms and conditions written in the partnership deed. और क्या क्या आता है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो, retirement or death of partner, treatment and settlement. So if some partner is retiring, how will we settle his contribution? उसने जो contribute करा था उसको उस पर पैसे मिलने चाहिए, बहुत चीजें होंगी. उसने अगर पार्टनरशिप से लोन लिया है या उसने पार्टनरशिप को लोन दिया है, if that retiring partner has given loan to the firm or taken the loan from the firm or anything else, many things are there. So we will decide accordingly and we will see that according to the partnership deed. Again, methods for dispute resolution. Now this is something which I laugh at always. Now how you can write that methods of solving disputes? मुझे बताओ, जब लड़ाई होती है कोई ये सोचता है कि उस पे ये लिखा है रेजोल्यूशन पार्टनरशिप डीड पे, जब पार्टनर लड़ेगा तो लड़ेगा, बट स्टिल इट इज देयर. यू कैन राइट कि how you will solve the disputes. So that is also written here. Methods to solve the dispute. Maintenance and audit of firm's account. How you will maintain your account. How the auditing will take place. Next, banking arrangements and authority. And last is the dissolution of the partnership. Now, unfortunately, अगर हम अपना फूड बिजनेस बंद करना चाहते हैं, क्या नहीं चल रहा, हमसे नहीं हो पा रहा, हम तीनों के साथ में बॉन्डिंग नहीं बैठ रही, we want to end this business for all, बंद बिल्कुल, the partnership is absolutely getting finished. ठीक है. Now what will be the procedure for that? Who will get what? जो भी सामान होगा उसका सेटलमेंट कैसे होगा, everything will be discussed and then we will act accordingly. Yes, so that is what we are talking about. So these are the contents of partnership deed. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।